हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज जो है वो हम एक बांग्लादेशी वीडियो पे react करने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है। तो एक बार फिर से हम बांग्लादेश को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश मेगा प्लान टू बिल्ड द फ्यूचर। तो जैसे कि हमें टाइटल से आइडिया हो रहा है कि इसमें जो ये काफ़ी डेवलपमेंटल टाइप वीडियो होने वाली है कि इसमें हमें पता चलेगा कि बांग्लादेश किस तरह से जो है वो सारे डेवलपमेंट पे काम कर रहा है अपनी, और उसकी प्लानिंग के बारे में पता चलेगा कि ऐसा क्या बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला नियर फ्यूचर में कि जिसमें बांग्लादेश हमें मज़ीद हैरान करेगा। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में इतना हमें बांग्लादेश का नाम इतना ज़्यादा उस तरह दुनिया में फेमस और मशहूर नहीं होता जितना हमें वीडियोस में देख के पता चलता है कि इतनी ज़्यादा बांग्लादेश ने ख़ुद को इवॉल्व किया, डेवलप किया। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। This is Bangladesh, one of the fastest growing countries in the entire world. It is a nation that is continuing to emerge as a global economic powerhouse as it registers robust economic growth. In 1990, it had a nominal GDP of only 31 billion US dollars, but by 2020, it had experienced tremendous growth after its GDP was estimated to be worth over 330 billion dollars. But the country's most exciting stories lie in its future state and the infrastructure developments that would support its transition to becoming an economic powerhouse. Before we move on, don't forget to leave us a like and hit that subscribe button for more. Bangladesh is an economy that has grown tremendously in the past and will continue to do so in the future. Its nominal GDP is expected to reach $1 trillion by the 2030s, which makes the next decade Bangladesh's time to become one of Asia's leading economies. This decade will also be a time for society to become a fully digitalized, tech-savvy population. And all of these will be possible because of the infrastructure that is supporting the nation. The country of Bangladesh is well on its way to doing so. It has planned and constructed world-class infrastructure developments across the land. From mega projects of transportation systems to power-generating energy projects. Fascinating financial and business districts are just among the many other master plans that would embark the country to be a stronger future. The most notable infrastructural schemes to know, however, are mostly in the transit systems. There are currently quite a number of railway projects the country is focusing on, and most of these are estimated to be worth upwards of billions of dollars. The largest agenda is yet to be seen, but is the so-called Dhaka-Chittagong Railway, an $11 billion, 227-kilometer high-speed rail line. If it would ever be completed in the future, it would be the country's most amazing mega project it has ever constructed, as making it requires a lot of money and expertise. The following expensive endeavors are the likes of the Dhaka subway, an $8 billion, 258-kilometer underground rail network that would connect the various places of the capital of Bangladesh. Dhaka MRT lines, which is also similar to the subways by having its own rail network system. And finally, a staggering $2.5 billion airport expansion to the Hazrat Shah Jalal International Airport. Furthermore, there will also be the construction of bridges and road links, such as the Padma Bridge and the Dhaka Elevated Expressway. Other than the transportation agendas, the next biggest endeavors taking shape are the energy projects, one of which is estimated to be worth billions of dollars as well. The Rupur nuclear power plant is the biggest amongst the two, as it has a construction budget of $12.6 billion. It will also be the country's first ever nuclear power plant. Nuclear power plants are, however, notorious for having dangerous incidents in the past. However, this one will be treated with special hands, as the building safety measures are helped by Russians. Entertainment will also be a key factor in helping the country's economy. This is through a future sports entertainment complex known as the Sheikh Hasina International Cricket Stadium, which will be one of the largest stadiums around the world. A deep seaport project known as the Matabari Deep Seaport will be its master plan to enter the sea trade stronger. This will be the country's first ever deep seaport and is expected to have an annual capacity of 1.1 million TEUs. Along with these mega projects, there will also be a mega township which is locally known as the Purbachal.
and it will be Or- Bangladesh's next central financial and business district. It is a township that has been allocated tens of billions of dollars to construct a society filled with innovation. The entire project will consist of several super tall skyscrapers, one of which reported to be a 142-floor, 734-meter building called the Legacy Tower. These infrastructure plans will help position the economy of Bangladesh as a competitive economic nation in the future. As the country advances further, the structure of the country is slowly shifting away from a traditional type of living to a more modern and technology-driven society. These are very common for emerging countries like Bangladesh, where the former of having an agricultural-based economy slowly turns into a service and manufacturing-oriented economy. Moreover, public spending and investments are not the only ones driving the economy. Private corporations and institutions are also doing their part and are doing far more in investing than the public. As the nation slowly proceeds with these, connectedness and innovation will eventually bring prosperity to not only its people, but to the rest of the world. तो इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो पूरी कंट्री की जीडीपी ने इम्प्रूव किया। जैसे कि हमें इस बारे में पहले भी इंफॉर्मेशन है कि अगर पीछे चले जाएं कुछ हिस्ट्री में, तो जब 1971 में बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ तो कितना लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे के लोगों के पास कुछ भी नहीं था। यानी जब लोग माइग्रेट करके अपने अपनी कंट्रीज शिफ्ट हो गए तो ये एक ज़ीरो लेवल से इतना ज़्यादा ग्रो करना बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल रही है बांग्लादेश की। और पहले जो हमने जेनोसाइड वगैरह पे भी रिएक्ट किया था कि बांग्लादेश में किस तरह के हालात थे और कितना बुरा सलूक हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद भी अगर कोई मुल्क अपनी स्टेबिलिटी को इतना इम्प्रूव करता है और अपने आप को इतनी जल्दी अपग्रेड कर लेता है, तो ये उसकी सक्सेस को कितना डिफ़ाइन करती है कि उसने अपना दुनिया में कितनी जल्दी नाम बना लिया है। तो बांग्लादेश उन्हीं मुल्कों में से एक है जिसने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रो किया। बाकी उन्होंने जिस तरह बताया कि जो है वो काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट्स पे जो है वहाँ पे काम हो रहा है, जिसमें हमें वो एक पैदमा ब्रिज देखने को मिला और एक बोट स्टाइल स्टेडियम था जो कि शेख हसीना के नाम पे होगा। उसमें स्टेडियम बनाया जाएगा तो वहाँ मैचेस खेले जाएंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्टेडियम के अंदर जब मैचेस होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लेयर वहाँ आते हैं, तो कितना फ़ायदा होता है उस मुल्क को कि उसके अंदर प्रमोट होता है वो मुल्क डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कि जब वो प्लेयर्स आते हैं तो वो विज़िट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ को, और फिर इस तरह हम देखते हैं कि दूसरी कंट्री से लोग आते हैं तो टूरिज़्म भी प्रमोट होता है। उसके अलावा उन्होंने इसके साथ ही जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले एक बुलेट ट्रेन आई थिंक सो और एक और रेलवे लाइन्स के बारे में भी बताया कि वो हाई स्पीड रेलवे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो नियर फ्यूचर में काम हो रहा है, बहुत सी चीज़ों पे, बहुत से टाउनशिप्स हैं और इन पे काम कर रहा है बांग्लादेश। उसके अलावा एक एयरपोर्ट की भी बता रहे थे हज़रत शाहजलाल आई थिंक सो, इंटरनेशनल तो मतलब ये कि काफ़ी और टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड भी जो प्रोडक्ट्स हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कंप्लीट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो जल्द आएगा। और इससे पहले उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से काफ़ी ज़्यादा, जब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह खारिज होती हैं तो एक बड़े पैमाने पे इससे नुकसान होता है, लेकिन इस दफ़ा रशिया भी सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को उसमें, तो काफ़ी इस दफ़ा वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ वो सारा कुछ केयरफुली करेंगे। तो बाकी आप लोग मज़ीद जो है वो इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हो कि आप लोगों को पता हो कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं या अभी इन पे काम हो रहा है, तो नियर फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। और जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और उसके ऊपर वीडियोस बनेंगी तो हम वो भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि जब कोई कंट्री ग्रो करती है और अपने आप को इतना नाम बनाती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके बारे में आपको दुनिया में शेयर करना चाहिए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते ये चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हमें ये नॉलेज वीडियो से मिल रहा है तो हमारी वीडियो से और लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। तो बाकी ये है कि आप लोग मज़ीद इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हो या जो भी कोई प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।